Hello everyone, as we are back with our another set of questions. Today we are going to discuss questions from the chapter Light, Reflection and Refraction. So starting from the very first question, we have A, B, C and D box. 10 rays are passing from the box and after क्रॉसिंग द बॉक्स द रेज आर इन्वर्टेड मीन्स जो 10 to 1 का सेट है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू 1 to 10. So now you have to identify the box behaves as rays have inverted. It means the box is convex lens because convex lens है वो हमें inverted image provide करता है. That's why 10 became 1 and so on 1 became the first position means inverted image. Moving on to the second question. Again हमारे पास 2 boxes हैं. You have to identify the box first and second. So अगर हम A box को देखें आफ्टर पासिंग थ्रू द बॉक्स रेज गेट डाइवर्स उनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है. इट मीन्स सो डाइवर्जिंग लेंस मीन्स कनकेव लेंस. सो इसके अपोजिट बी रेज को कन्वर्स कर रहा है मीन्स फर्स्ट टू लास्ट एंड जो लास्ट रे है वो हमारी फर्स्ट बन रही है आफ्टर passing through the focus point. It means B is a convex lens. So moving on to the next question, you have to find out how can the angle with the normal be measured. तो first बिल्कुल wrong है because normal is perpendicular to the rectangular glass slab. तो जो perpendicular है उसी के along हम हमारे प्रोटेक्टर को प्लेस करेंगे. So the correct answer is B. बिकॉज सी में नॉर्मल ड्रॉ नहीं किया एंड इन द फोर्थ दैट इज एंगल मेजर नहीं कर सकते. मूविंग ऑन टू द बी पार्ट इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रिज्म. सो इन दिस डायग्राम यू हैव टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द मिस्टेक इज डन वाइल प्रिपेयरिंग द डायग्राम. सो आप देखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस करेक्ट है, एमर्जेंट एंगल करेक्ट है, इंसिडेंट रे एमर्जेंट रे करेक्ट पोजीशन पे हैं, R1 R2 इज ऑल्सो करेक्ट. बट द मिस्टेक इज वाइल ड्राइंग द नॉर्मल्स. सो करेक्ट आंसर विल बी बी ऑप्शन दैट इज नॉर्मल इज ड्रॉन रॉन्गली बिकॉज नॉर्मल यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं किया गया अलॉन्ग द साइड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन related to prism again. In this question you have to identify which is the correct. So first में अगर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में I के साथ लिखा हुआ है एमर्जेंट रे, रॉन्ग बिकॉज इसके साथ होती है इंसिडेंट रे. और सी ऑप्शन में देखेंगे तो रिफ्रैक्टेड रे लिखा हुआ है टुवार्ड्स द लेफ्ट साइड, इट्स अगेन रॉन्ग. नाउ मूविंग ऑन टू बी एंड डी ऑप्शन, दोनों में इंसिडेंट रे है, राइट साइड में एमर्जेंट रे है, करेक्ट है. एंड जो मिडिल है वहाँ पर आपके बी ऑप्शन में लिखा हुआ है रिफ्रैक्टेड रे एंड सी में गिवन है एमर्जेंट रे. सो एमर्जेंट रे प्रिज्म के बाहर निकलने वाली रे को हम बोलते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रिलेटेड टू द एंगल्स. So in this question you have to find out the correct observation recorded at serial. Means angle of incidence, angle of refraction and angle of emergence when light passes through a rectangular glass slab. तो rectangular glass slab पर हमारा सबसे अच्छा रिजल्ट आता है that is angle of incidence is equal. So I equals to E. सेकेंड और थर्ड हमारे बिल्कुल रॉन्ग हो चुके हैं. नाउ ऑप्शन इज फर्स्ट एंड फोर्थ. सो I इक्वल्स टू E है दोनों में, बट एक कंडीशन और भी होती है I इक्वल्स टू E इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. सो फर्स्ट हमारा करेक्ट है दैट इज ऑप्शन ए बिकॉज इन फोर्थ I इक्वल्स टू E बट ये स्मॉल हो गया है R से, बट कंडीशन है ग्रेटर देन R. सो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट. I equals to 45, emergence angle equals to 45, refraction that is 41 जो इन दोनों से लेस है. Moving on to the next question.
Which of the following figure is correct for a monochromatic ray of light passing through a prism? So here only A option is correct for rays of path. इसके साथ हम एक कंसेप्ट और देखेंगे मोनोक्रोमेटिक रे एंड इसके साथ देखेंगे पॉलीक्रोमेटिक रे। सो फर्स्ट मोनोक्रोमेटिक रे क्या होता है? ऐसी कोई भी रे जिसकी सिंगल वेवलेंथ हो और सिंगल कलर हो, मीन्स जो प्रिज्म के डिस्पर्जन से हमें रेज ऑफ लाइट ऑब्टेन होती है, दैट इज 7 कलर्ड रे ऑफ लाइट विद ग्योर। All the rays of light have single wavelength and single color, so that's why these all are monochromatic. बट अगर हम वाइट लाइट की बात करें, दैट इज इंसिडेंट रे, तो वो होती है हमारे पास polychromatic, because white light is a combination of 7 color means 7 different wavelengths are there. So white light is polychromatic and the 7 colored spectrum dispersion lights are monochromatic. Moving on to the next question, how will the image formed by the convex lens be affected if lower half of the lens is wrapped with a black paper? मीन्स अगर हम लेंस के हाफ पार्ट को रिमूव ही कर दें, ब्लैक पेपर मीन्स रिमूव कर दिया, सो आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, मीन्स इमेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। फर्स्ट है लोअर हाफ ऑफ द इमेज विल बी एब्सेंट, दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज अपर हाफ से बहुत सारी रेज ऑफ लाइट पास होंगी और हमारी इमेज ऑब्टेन होगी, मीन्स लोअर हाफ ऑफ इमेज एब्सेंट नहीं होगा। Next is the size of image is reduced to 1/2. That's also not possible. The brightness of the image is reduced. And fourth is there will be no any effect. तो इफेक्ट तो पड़ेगा दैट इमेज में अगर ऑब्जेक्ट की रेज कम होंगी तो इमेज की ब्राइटनेस पर अफेक्ट आता है। सो अपर हाफ से अगर रेज आएंगी तो रेज विल पास एट हाफ, सो दैट्स वाई इमेज की जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाएगी, बट इमेज ऑब्टेन होगी बिकॉज फॉर इमेज फॉर्मेशन वी नीड ओनली 2 रेज। तो अपर हाफ से 2 से ज़्यादा रेज पास होंगी, so that's why we will be able to get image by half length also. Next is the angle of deviation is equal to, जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो किसके इक्वल होता है? ए ऑप्शन इज बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग फेसेस ऑफ प्रिज्म, रॉन्ग। सेकंड इज बिटवीन एमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे। सी ऑप्शन है बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड प्रिज्म एंड इंसिडेंट रे। फोर्थ इज बिटवीन एमर्जेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे दैट इज इनसाइड प्रिज्म। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास बी, दैट इज बिटवीन एमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे। जो इंसिडेंट रे किस एंगल पर डेविएट हुई है तो हम एमर्जेंट रे को बैकवर्ड, इंसिडेंट रे को फॉरवर्ड इमेजरी लाइन से ऑब्टेन कर सकते हैं, उसे ही बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। सो इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ। सो फोकल लेंथ मेजर करने के लिए हम किस डिस्टेंस को मेजर करेंगे? So as we know that the distance between image and mirror is called focal length because concave mirror रेज को कन्वर्ज कर देती है फोकस पर, दैट्स वाई वी गेट इमेज। सो वी मेजर द डिस्टेंस ms. ऑप्शन बी इज करेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगेन आफ्टर क्रॉसिंग द लेंस दैट इज x, जो लेंस है, रेज लेंस को क्रॉस करने के बाद जिस पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही हैं उसे हम बोलते हैं focus. So in this question the device that is x is a convex lens of focal length 8 centimeter. So D option will be correct. Next, moving on to the another question, that next very easy question, that is you have to find out angle of prism, that is O. Next, angle of incidence, that is x. Next, angle of emergence, that is m, and angle of deviation, that is z. So the correct option will be option number C. Moving on to our next question.
Here again we have to find out angle of incidence, that is x. Angle of emergence, that is m. Next is angle of deviation, that is z. So x, m, z, that is D is correct answer. Moving on to the next question, that is for tracing the path of a ray of light through a glass prism, the most appropriate distance between the two pins must be. So the distance between two pins will vary from 3 to 5 centimeters. C is correct option. Moving on to next one, that is some rays are given, that is incident I1, I2 and I3. You have to classify which correctly show refracted rays. So 1, 2 and 3, that is there is no rule that after passing through any lens rays will move like this. So correct answer will be option B, 4, 5 and 6. These three are the correct rays, or we can say correct path. That is I1 after crossing the lens passes through F1, that is ray number 4. Next is I2. If passing from the center of the lens, we can say optical center, it will move straight. That is ray 5. Next is if the ray crosses the focus before lens, then it will be parallel. That is ray number 6. So next question, in an equilateral prism, the angle of prism is equilateral means each angle 60 degree. So correct option will be option number A. Next, in these figures, which one represent the correct paths of rays? So here two answers are correct. That is first and the fourth. A and D options are correct because incident ray and normal angle is 0 degree, so the ray will not deviate from its path, that is move straight. Next, question number 8, for same figure question number 7, the angle of incidence is, so normal and incidence angle, that is 0. Incident ray making 0 degree angle with normal, correct option will be C option. Moving on to the next question, that is the angle of deviation through a prism is maximum when the angle of incidence is, means जो deviation angle maximum कब होगा. So जब angle of incidence prism से 90 डिग्री पर इंसिडेंट होगा, then the angle of deviation will be maximum. Next is for a given prism the angle of deviation is maximum for the color. तो यहाँ पर आपको पैटर्न माइंड में होना चाहिए, that is Vibgyor. Red with maximum wavelength and violet with minimum wavelength. So as wavelength decrease from red to violet, the deviation angle will increase. So the angle of deviation is maximum for the violet color. Correct option will be A. For tracing the path of a ray of light through a glass prism, the ideal distance between two pins. That's the repeated question, 3 to 5 centimeter. B is the correct answer of this question. Now moving on to our next question. So in this question, we have to find out the correct diagram of prism. So if we moving on to the A option, that is the inverted prism condition. B is wrong because ray of light is not moving in correct method. D is also wrong because rays are not moving in correct. So जो C फिगर है वहाँ पर B लिखा हुआ है by mistake. That is C option is correct because it is the correct ray diagram for a prism: incident ray, refracted ray and emergent ray. Moving on to next question, in case of minimum deviation which of the following conditions is satisfied? तो minimum deviation की condition में prism पर angle of incidence is equal to angle of emergence होता है, that is B option is correct. और angle of prism, here we have to find out the angle of incidence, that is Y. Angle of emergence, that is Q. Angle of deviation,
that is P. So YQP. D is the correct option in this question. होप यू गॉट इट. अगर हम बात करें P की तो ये एंगल ऑफ डेविएशन, एंड X और T की बात करें तो ऐसे कोई भी एंगल हमारे प्रिज्म में एग्जिस्ट नहीं करते. हम ऐसे एंगल्स को मेज़र नहीं करते. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इन नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमें करेक्ट पाथ बताना है रे का. सो दैट्स वाई क्यू, दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट, बिकॉज हमने पहले भी काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं प्रिज्म से रिलेटेड. सो बी इज करेक्ट ऑप्शन. So that's all about our today's video. Hope you got some knowledge.